अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि सैयद अब्दुल क़ासिम हुसैनी आप पर्दा फरमाने से कुछ दिन पहले आप अपने बड़े फर्जंद सैयद हुसैन ज़ाहिद को अपना जानशीन करार करके पर्दा फरमा गए और आपके इंतकाल के 40 पर 5वां दिन था कि आपके बड़े फर्जंद ने आपके तख्त को बहुस्न खूबी संभाल लिया और आपके फर्जंद सैयद हुसैन ज़ाहिद ने आपके नाम पर बहुत सारे मसाजिद और लंगर खाने का भी ऐलान कर दिया और उसकी तामीर भी शुरू कर दी। और सैयद हुसैन ज़ाहिद की ये रोज़ाना आदत थी कि आप रोज़ाना तिलावत कुरान में मशगूल रहा करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि मुल्क सिस्तान में कई सालों तक बारिश का नामो निशान न था, तो आपने अपने सिपाहियों को साथ लेकर मुल्क सिस्तान का गश्त करते हुए एक दिन बाज़ार के तरफ रवाना हुए। तो आप वहाँ क्या देखते हैं कि तमाम रियाया जो है अफसरदा है, क्योंकि पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा थी और उस जगह पर एक शख्स आपको देखकर हंस रहा था। तो आपने उससे दरियाफ्त किया कि उसके हंसने की वजह क्या है। तो उसने कहा कि मैं एक सौदागर का नौकर हूँ, मुझे हर रोज़ पेट भरकर खाना खिलाता है और पानी देता है। ये आप कैसे बादशाह हैं कि आपकी बादशाही में तमाम रियाया अफसरदा है, आपकी हुकूमत में रियाया तमाम परेशान है। तो आप यह बात सुनकर उसको कुछ नहीं बोले और वापस अपने किले की तरफ रवाना हो गए और जाकर अपने हुजरे में दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद आपने लगातार 40 दिन तक अल्लाह सुब्हानहू तआला से इबादत में लगे रहे और मुनाजात भी करते रहे। आपका ज़िक्र हर वक्त यही था कि या खालिक़ु कुल्ली शै या रज़्ज़ाक़ु कुल्ली है। इसका माना यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही है जो हर जानदार चीज़ को रिज़्क़ देने वाला है। और 40वां दिन था, आप फजर की नमाज अदा करके सजदे से उठने ही वाले थे कि आपके हुजरे के अंदर खिज़र अलैहिस्सलाम दाखिल होते हैं और आपको बाअदब अस्सलाम किया। तो आपने भी उनको सलाम का जवाब दिया और उन्होंने आपको खुशखबरी ये सुनाई कि बारगाह रब्बुल आलमीन में तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और मुल्क सिस्तान और शाहपुर में अनकरीब बारिश होने वाली है। तो उनका ये बात कहना ही था कि कुछ ही देर में बारिश होने लगी और आपने जन्नत से लाया हुआ मेवा आपको देकर फरमाया कि ये मेवा आप और आपके अहलिया दोनों खाएं और उसके बाद आपकी अहलिया जब हामिला होंगी तो जो भी औलाद होगी वो बहुत ही नेक होगी, वो इस्लाम की रोशनी जो है और भी आगे फैलाएंगे। और उन्होंने 4 करामात का भी इजहार किया कि औलाद पैदा होने से पहले इन 4 करामातों का भी ज़हूर होगा। उनमें से पहला ये था कि वो लड़का अपनी माँ के पेट से कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर देगा और दूसरी करामत ये थी कि उस लड़के के पैदाइश का आलम यह होगा कि चांद के मानिंद रोशनी जो है फैली हुई होगी। तीसरी करामत ये थी कि आपकी पैदाइश कोई नहीं देख पाएगा। और चौथी करामत ये कि आम दिनों से कुछ ज़्यादा ही मुल्क सिस्तान और शाहपुर में फुकरा होंगे और आसमान की तरफ पुरनूर अरवाह यानी मलाइका का नजूम होगा। ये कहकर आपने वहाँ से चल दिए। तो सैयद हुसैन ज़ाहिद और उनकी अहलिया दोनों ने उस फल को खा लिया। कुछ ही दिनों में आपकी अहलिया ने हामिला हो गई और जैसा ही दरगज़ा का वक्त करीब आया तो उस वक्त महीना रमज़ानुल मुबारक का था और लैलतुल क़द्र की रात थी कि आपके शिकम से कुरान की तिलावत की आवाज़ आना शुरू हो गई। तो फ़ौरन आपने वज़ू किया, फिर नमाज अदा की और उस रात को अब जाकर लेट जाते हैं। और आप ख्वाब में क्या देखते हैं कि आवाज़ आती है कि अनकरीब कुरान शरीफ की तिलावत ख़त्म होने वाली है और हम अनकरीब फ़र्जंद को आपके जानिब भेजते हैं। तो ये ख्वाब देखकर अब फ़ौरन जाग उठी और उसके बाद फिर वज़ू करके तहज्जुद का वक्त करीब था, आपने तहज्जुद की नमाज़ के लिए खड़े हो गए। तहज्जुद की नमाज़ के आलम में आप में इतनी ताकत नहीं थी और आप बेहोश होकर गिर पड़ी।
تو تمام جتنے بھی دائین موجود تھے، یعنی ادھر کام کرنے والے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، ان تمام لوگوں نے آپ کے قریب آنا چاہا، مگر ایک ایسا نور یعنی چاند کے جیسا نور تمام کمرے کے اوپر چھا گیا اور آپ کی آنکھ کی جو روشنی ہے وہ زائل ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس بے ہوشی کے عالم میں آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے کہ ہم یہ جنت کا پھول آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس بچے کے ارد گرد ملائکہ کا نجوم ہے اور ابلیس اس بچے کے قریب آنا چاہا، مگر ملائکہ کے ہاتھ میں کچھ عصا یا لکڑی کی طرح تو اس کے ذریعے وہ لکڑی کے ذریعے وہ ملائکہ اس ابلیس کو بھگا رہے تھے۔ اور آواز ہاتف آئی کہ اے فاطمہ مدنی صغیر جلدی اٹھو، تو یہ آواز سن کر اب فوراً اٹھ جاتی ہیں اور آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے فرزند پیدا ہو چکے ہیں اور آپ کے فرزند کا ہاتھ، ایک ہاتھ اپنے دونوں آنکھوں کے اوپر تھا اور دوسرا ہاتھ اپنے شرمگاہ کے اوپر موجود تھا۔ آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ ان کو اٹھا سکیں، تو اس لیے انہوں نے فوراً آواز لگائی۔ یہ آواز سن کر تمام دائین جو ادھر موجود تھے وہ پھر ہوش میں آ گئے، اور فاطمہ مدنی صغیر نے ان تمام سے کہا کہ مجھے ایسے عالم میں چھوڑ کر تم تمام لوگ سو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مادر مومنین ہماری بھی کچھ سنیں۔ جیسے ہی ہم آپ کے قریب آنے لگے تو ایسا نور روشن ہو گیا تھا تمام کمرے کے اوپر کہ ہماری آنکھ کی جو روشنی ہے وہ زائل ہو گئی تھی، اور ملائکہ نے سید حسین زاہد کے گھر ایک عصا بھی چھوڑ کر گیا تھا اور اس کا نام جنتی غواص رکھا گیا۔ پھر فرزند جو پیدا ہونے کی خبر تھی وہ سید حسین زاہد کو اطلاع دی گئی، تو آپ نے نخارچیوں کو اعلان کیا کہ وہ تمام نغارہ بجائیں۔ تو اس آواز سے تمام لوگ جو شہر کے تھے وہ تمام لوگ جاگ اٹھے، اور باہر آ کر تمام صوفی اور درویش کیا دیکھتے ہیں، تمام ملائکہ پر نور ارواح آسمان کے طرف پر نور ارواح گشت کر رہی ہے۔ تو یہ تمام ماجرا دیکھ کر آپ کو خضر علیہ السلام کی بولی ہوئی تمام باتیں یاد آ گئیں۔ سیدنا بابا فخرالدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی خاطر لوگ بہت دور سے آنے لگے، اور سید حسین زاہد نے اس وقت 900 علماء موجود تھے، ان تمام کو اکٹھا کر کے اپنے فرزند کو نام رکھنے کے لیے اعلان کر دیا۔ تو انہوں نے تمام تجویز کر ان کا نام سلطان سید بابا فخرالدین حسینی رکھا گیا۔ سیدنا بابا فخرالدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے 26 رمضان المبارک یعنی لیلۃ القدر کی رات 560/4 ہجری کو ہوئی ہے۔ تو دوستوں، کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں، کچھ بندے خدا کے ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں ترقی کرتے ہوئے، اپنے ایمان کو ترقی کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسے مشغول ہوئے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ولی بنا دیتا ہے۔ تو کچھ اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ماں پیٹ سے ولی ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں پیٹ ولی ہیں، ویسے ہی سیدنا بابا فخرالدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ماں پیٹ ولی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اولیاء اللہ کا درس سن کر ان کی سنائی ہوئی باتوں پر ہم بھی عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ So, before Sayyid Abdul Qasim Hussaini passed away, he announced his elder son Sayyid Hussain Zahid as the successor to his throne. And after his father passed away, it was on the 45th day that he took charge as a king of Sistan wa Shahpur. The king was very soft-hearted. He also helped a lot of poor people. He also constructed a lot of almhouses for the people who are very poor. Sayyid Hussain Zahid also had a habit of reading Quran Sharif throughout the day. And under his tenure as a king of Sistan, there was no rain for a very long period of time. Due to lack of rain, the people of Sistan were starved. One day, the king along with his soldiers decided to visit Mulk Sistan. As he entered into the marketplace, he saw all the people. They were very sad. He saw one person who was laughing upon looking all this. He asked that person the reason why he was laughing, whereas all the other people are so sad.
To which he replied that he works under one merchant or a businessman who is very rich. He has a lot of food and water in his home through which he could fill his belly. Being the king of Sistan or Shahpur, under your governance, all the people here are struggling and there are a number of people who are dead. To which the king of Sistan, he didn't utter a word, he straightaway went inside his palace and he went inside his hujra, that is his praying room, where he continuously prayed for 40 days. His zikr included Ya Khaliqu Kulli Shay, Ya Razaqu Kulli Hayy, which means Allah subhanahu wa ta'ala is the one who creates everything and He is the one who feeds all the living beings. And on the 40th day, after completing the morning Fajr Salah, he saw Khizr alayhi salam in his hujra, that is his prayer room, and he greeted him by saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, to which he replied Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. And he told that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded him to go and inform the news that his dua has been accepted in Bargah Rabbul Alameen and there will be a rain in Sistan Shahpur. As soon as he started to say these words, it started raining in Sistan wa Shahpur and the king felt very happy. And Khizr alayhi salam also brought along with him a fruit from Jannah and told him that he and his wife must eat this fruit. After some time, his wife will become pregnant and through which a baby boy will be born. And he will fight against all the evils and he spreads the light of Islam throughout the world. And he also mentioned 4 miracles which will take place during the birth of that child. The first one is that he will start to recite Quran Sharif from the womb of his mother, and the second one is at the time of his birth a light will start to illuminate the entire place like a moon. And the third one is no one would be able to see the birth of Sayyidina Fakhruddin rahmatullah alayh. And the fourth one is all the Sufi saints and Khalandars in Sistan or Shahpur will be much more when compared to the normal days, and the angels will be swirling over the Sistan and Shahpur. And then he left from his hujra. Then Sayyid Hussain Zahid along with his wife, they ate that fruit, and after some time his wife got pregnant. When the time came close to give birth, she heard the sound of Quran Sharif from her womb. In her dream, she heard a sound which said, O Fatima Madani Saghir, the reading of Quran Sharif or the tilawat of Quran Sharif is very close to get completed and we will send him to you very soon. As soon as she saw this dream, she woke up. It was at the time of Tahajjud. She again performed wuzu and she stood for namaz. She was ill by that time and she felt unconscious. And the workers who were present with her, they tried to come near her. What they saw was a light that illuminated the entire place and they were not able to see, and they also felt unconscious. Fatima Madani Saghir saw a dream in which a boy has been born and all the angels are surrounding that boy, whereas the Iblis is trying to come near to that boy. And the angels have some sort of stick or asa with them and they are trying to beat him with those sticks. And the sound came, O Fatima Madani Saghir, we have sent a flower from Jannatul Firdaus to you and your child has been born, now wake up. After listening to this sound, she woke up and she saw a child has been born and one hand of him is placed upon the 2 eyes and the other hand is placed upon the private parts of his body. She didn't have enough strength to lift the baby and she started to call her workers and she saw that everyone was unconscious. As she started to call all of them, they started to gain their consciousness and she asked them that she is to deliver a baby and how come they all are sleeping. To which they all replied that, "A Mother-e-Mu'mineen, we were coming towards you to help you and at that time we saw a light that illuminated the entire room and we lost our eyesight
and we felt unconscious. They soon informed about the baby boy to his father, Sayyid Hussain Zahid, and the king ordered to beat the drums in his palace. By the sound of it, the entire Sistan and Shahpur, they woke up, and they came outside and they saw that the angels were swirling around in the skies of Sistan or Shahpur. They all thought that this is one kind of a sign of a judgment day. Then they announced from the palace that a baby boy has been born to Sayyid Hussain Zahid. And they all gathered there, and the king ordered approximately 900 ulamas or Sufi saints who were present there. They all calculated and they all selected a name for that baby boy. His name would be Sultan Sayyid Baba Fakhruddin Hussaini. So there are some people who become awliya Allah by the way of doing ibadat, and some people may become awliyas through the blessings of other awliyas, and some people may become awliya through their own good deeds. But there are some awliyas who are awliyas in their mother's womb also. So in this category we could name Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayh, as well as Sayyidina Baba Fakhruddin Rahmatullah Alayh, and there are also some other awliya Allahs. We must take a note about this awliya Allah's life, regarding how they spend their life and what are their preachings in order to improve our iman and lead a good life. Inshallah Ta'ala, in the next episode we will continue the history of Sayyidina Baba Fakhruddin Rahmatullah Alayh. Assalamu alaikum.